we start programming session. Okay, so first of all, every open your Gmail ID. Okay, so you can see my Google Drive open now, and you create the new folder. Okay, so new folder name is, you give the write the folder name like bright future Python Python course. Okay, so you create the folder in the Google Drive. So every code you can save in this folder. So I have created the bright future Python course. Now create this folder. So my folder is already created. You can see. Now click on this folder. Okay. So this is my folder name, and this folder name under the my drive. So if you have any problem, then please tell me. Or I think you have already done this task. Now right click here. Inside the So folder, can you please repeat it once? first you open your Gmail ID. Okay. Okay. Then go to the you can see the mouse cursor. Here you click here, Google Apps. Okay. Then you find the Google Drive. This is the drive. You click the drive. क्लिक कर लिया आपने. So this is purpose is whatever you have created, like we will implement the Python code on the Jupyter notebook. Okay, so this Jupyter notebook I want inside this folder. So आपने कर लिया है, ड्राइव ओपन हो गई. Yes, sir. ड्राइव ओपन होने के बाद आप इस पर जाओ, न्यू पर. न्यू जैसे ही आप न्यू क्लिक करोगे तो देन यू कैन सी न्यू फोल्डर. यू क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर. तो जैसे न्यू फोल्डर आया तो यू गिव द नेम हियर, ब्राइट फ्यूचर पाइथन कोर्स. ठीक है, यहां तक हो गया. नाउ आई क्लिक हियर, राइट क्लिक. यहाँ पर इसमें ब्राइट फ्यूचर पाइथन कोर्स के अंदर में आप राइट क्लिक करो, माउस से राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करने के बाद यू कैन सी दिस इज द मेन्यू एंड क्लिक ऑन द मोर. देन यू कैन सी दिस इज द गूगल कोलैबोरेटरी. ठीक है, गूगल कोलैबोरेटरी. यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क. So you can see this is the Google Collaboratory. So I will write the Python code here. So this is the Jupyter notebook. सबने ओपन कर लिया इसको. मैंने इसको डायरेक्टली गूगल कोलैब्स ओपन नहीं किया हुआ है. मैंने गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाई है ब्राइट फ्यूचर के नाम से, और उसके अंदर में मैंने इसको नोटबुक को ओपन किया हुआ है. ठीक है, एंड यू अपडेट द नेम. जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि यू कैन अपडेट द नेम. ठीक है, सो यू कैन गिव नेम लाइक you can Python example or Python ट्यूटोरियल के नाम से Python ट्यूटोरियल 1. Okay, so I have updated the this file name. So you can see Python tutorial 1.ipynb. Okay, so first is calculation in Python. So how can we calculate in Python? So a write like x is equal to 3, or you can write any number. So this is the cell, this is the Python cell. So if you want to write any code, so you can write here. So x is equal to 3, and this is the cell. If you want to
अब इसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आई हैव टू रन दिस सेल। तो यहाँ पर जो एरो का सिंबल आ रहा है, यू हैव टू क्लिक दिस। आपने क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो दिस सेल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसका मतलब दिस इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, ये वाली सेल अभी एग्जीक्यूट हो रही है। सो दिस सेल हैज बीन एग्जीक्यूटेड, देन यू कैन इंसर्ट द नेक्स्ट सेल बिलो दिस सेल। तो मैंने यहाँ पर, you can insert up or you can insert down. Okay, so here, like I am writing y is equal to 3 multiply x. ठीक है, then again, so y is equal to 3 multiply x, so x is equal to 3 and this 3 multiply with 3, so this is the asterisk symbol on the keyboard. Then again run this code. तो अगर आपके पास यहाँ पर क्लिक, यू कैन सी हियर ग्रीन कलर टिक मार्क, इट मीन्स योर कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नाउ आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर कि यू कैन इंसर्ट द, यहाँ से भी आप क्लिक करोगे आप, तो यू कैन इंसर्ट द सेल बिलो ऑफ दिस सेल। प्लस कोड दिख रहा है यहाँ पर, प्लस कोड। तो व्हेन यू क्लिक हियर, देन यू कैन इंसर्ट दिस सेल। तो आप यहाँ पर सेल इंसर्ट कर लिया, देन प्रिंट y। ठीक है, मैं चाहता हूं यहाँ पर आई वांट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सो वी हैव द प्रिंट फंक्शन। ओके, प्रिंट फंक्शन से आई विल पास द y वेरिएबल। सो दिस इज द वेरिएबल, नाउ अगेन आई विल एग्जीक्यूट। सो प्रिंट y, सो वैल्यू इज 9। हमारे पास क्या क्या 9, कैसे, x इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द x इज द वेरिएबल आई हैव डिस्कस इन यस्टरडे क्लास। y is equal to 3 multiply x, here x multiply with 3 and 3 multiply 3 is equal to 9 and 9 is stored in the y variable. ठीक है, so y is the variable which contains the value क्या है यहाँ पर, value is 9. Now I would like to print this y, so print function used for printing the value of variable. तो मैंने यहाँ पर print कर लिया print y। ठीक है, so this is my first code. So now I would like to insert the next cell. तो यहाँ पर क्लिक करो आप। ठीक है, सो सेकेंड कोड इज, यू कैन सी इन माई स्लाइड, सेकेंड कोड इज a is equal to 2, a is equal to 2, b is equal to 5, x is equal to 3, y is equal to, you can write all this code in this single cell. Okay, तो मेरे पास क्या है, देखो मैंने a is equal to 2 I have written in above cell, so a is equal to 2 मैंने यहाँ लिखा। so you can write a is equal to e is equal to 2 here. Okay, so actually this is wrong. y is equal to a multiply x plus b, and you run this code. So y contain a multiply x plus b. So a is equal to 2, x is equal to 3, and b is equal to 5. Okay. Then I would like to print the y. So what is the function for print any value? Function is print function. Print से क्या पास करोगे आप? You have to pass the जिसकी वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हो। तो मेरे पास क्या है, y is equal to a multiply x plus b. Now you run this code. So y is equal to 11. ठीक है, so try to understand all are this is the basic code. So how can we assign the value in the variable? Okay, how can we write the mathematical expression, and how can we print the value? So next is, so you can also write this code on the IPNY, so ideally environment. So if you have any doubt here, so you can ask me. So now we comes on the number. So basically there are 3 types of number. So number is integer, float, and complex. Okay, so integer like x is equal to 3,
like x is equal to 3. Float means it may be so integer like x is equal to 3, whole numbers, positive or negative numbers without decimal. So integer may be -1, -2, -3, -4, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, but it should not be decimal. A decimal नहीं होगा. Float like x is equal to 3.14. So this is the floating number. And complex number. Complex number has real part and imaginary part. So 3 is the real part and 5j is the this is imaginary part. So there are two parts in complex number. So basically Python has, there are three numeric type: integer, float and complex. Okay. Now I would like to print this code. तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर एक सेल और इंसर्ट करनी है. तो मैंने यहाँ पर कोड में क्लिक किया and you can insert this cell. ठीक है. So like you can see I have written x is equal to 1. Okay. X is equal to 1, y is equal to 2.0, y is equal to 2.0, and z is equal to 3 plus 2j. 3 plus 2j. So Python has three types of number: integer, float and complex number. So here x is equal to 1. X is the variable which contain the integer, y is the variable which contain the float number, and j is the variable which contain the complex number. So I want to see the what is the type of x, what is the type of y, what is the type of z. टाइप का मतलब क्या है यहाँ पर कि x ने आपने लिखा हुआ कि x is equal to 1, तो x contain the integer value, y contain the floating value and z contain the complex number. So you can check the type. Okay. So next cell में मैं चेक करता हूँ यहाँ पर like print is the function, print, and मैंने क्या लिखा है यहाँ पर type and x. Okay. So what is the type? You can see here type. मैंने यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि what is the type of x? What is the type of x? तो x की type क्या है? What is the output? Output is integer. Because I have stored the integer value inside the x. But I would like to print what is the data type of x. तो आप इसको रिटर्न करा सकते हो, उसकी टाइप आप चेक कर सकते हो. कैसे? You write the print and this is the type is the function, और इस टाइप से आपको उस वेरिएबल को पास करनी है जिसकी आप टाइप चेक करना चाहते हो आप. ओके. Suppose I would like to check the type of y. Y is the variable. So how can we check the type? Same. You can write this code. So print. I would like, and what is the use of print? With the help of print, we can take the output. Okay. So क्या मुझे लिखना है यहाँ पर? मुझे लिखना है यहाँ पर टाइप और किस वेरिएबल की टाइप चेक करनी है. I would like to check the type of y. So I have written y here. So you can see what is the type of y. Type of y is float. And what is the float? Float is the number which contain the decimal. जैसे वो like 1.1, 1.2, यहाँ पर क्या है 2.0. इसकी टाइप फ्लोट क्यों आई? क्योंकि मैंने y के अंदर क्या स्टोर किया हुआ 2.0 एंड 2.0 दिस इज द डेसिमल वैल्यू, इसीलिए इसकी टाइप क्या आई? फ्लोट. ठीक है. नाउ आई हैव टू चेक द टाइप ऑफ z. So how can I check the type of z? So like you have to use the print function and you pass the type and write the type and pass the z. What is the z? Z is the variable and I have stored the complex number. Okay. Again you run this code. So I have run this code. So you can see it returns the complex. So what is the complex? Complex is the number types. Okay. So there are three types of number. First is integer, float and complex. Is it clear? Can anyone respond? Yes, sir, it is clear, sir. Okay. Next.
So like the next I would like to check the function fuel string. So string in Python are surrounded by the either single quotation marks or double quotation marks. Okay. So string, what is the string? String is nothing. This is a sequence of character. Like you are writing the hello, HELLO. So how many characters? So this is the string. So there are 1, 2, 3, 4, 5 characters. So a string is the sequence of characters. Okay. But how can how many functions are available? How can we take the print? So we will see the few examples related to the strings. Okay. So I have suppose a variable a is equal to, like I have written hello world, WORLD. Okay. So string in Python are surrounded by either single quote marks or double quote marks. So this is the double quote. You can see this is the double quote. Hello world is written in the double quote. You can also use the single quote. You can also use single quote. Okay. You can use the single quote. You can use the double quote. तो पाइथन में हम लोग सिंगल कोट से इसको आपको सराउंड करना है। किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप देखना, स्ट्रिंग का मतलब ये स्ट्रिंग मींस you have to surrounded by the any string in the single quote or double quote. So you can see here a is equal to hello world, and I have run this code. Now next I have insert the new cell. ठीक है, तो please any student can respond me. What is the a? What is a here? Sir, A is the variable. A is the variable. And what is the type of a? String. A string. Okay. So I would like to print a. So print a. Okay. So it will print. So it returns the hello world. Okay. So why it returns? Because a contains the hello world. And if you can check, I have enclosed this string with this single quote. तो मैंने इसे सिंगल कोट से भी इनक्लोज कर दिया, एंड अगेन आई रन दिस कोड. तो देखो आप यहाँ पर इसकी भी आउटपुट आ गई ना. सो ए में मैंने पहले हेलो वर्ड को डबल कोट से इनक्लोज किया, देन इट गिव्स द वैल्यू, रिटर्न द वैल्यू हेलो वर्ड, एंड मैंने इसको सिंगल कोट से भी इनक्लोज किया, देन इट रिटर्न्स द हेलो वर्ड. इट मींस यू कैन इनक्लोज द स्ट्रिंग विद द सिंगल कोट और डबल कोट. So next cell. So next is like I have written print a. This is the subscript. इसको हम लोग बोलते हैं subscript. This is the opening square. Mathematics में क्या बोलते हैं इसको? This is the square bracket. Okay. This is square bracket. So square bracket in the Python or C language we call with the subscript. So I have written here 1. So you can see what will happen. It returns the e, small e. So what is the a? A contains the string hello world. Okay. And मैंने start from the 0. So h, the position of h is 0, e is 1, l is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके. तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा यहाँ पर स्ट्रिंग में, तो इसकी सीक्वेंसिंग स्टार्ट होगी 0 से. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And when we are moving from right to left, then the sequencing start from the -1. Okay. तो -1, -2, -3, -4, -5, -6. तो यू कैन सी मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट करता हूं किसी भी स्ट्रिंग की लेफ्ट टू राइट, सो स्टार्ट विद द 0, एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इसकी सीक्वेंसिंग स्टार्ट होगी -1 से. ठीक है. तो -1, -2, -3. तो आप देख सकते हो यहाँ पर यू कैन सी आई हैव रिटन प्रिंट ए, और सबस्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या लिखा 1. सो
what is the character at the first position? So the character at the first position is small a. अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the character at the 0th position, तो 0th पर क्या है? कैपिटल H. ठीक है? So you can print any character, but you have to mention the indexing like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? तो अगर मैं देखो यहाँ पर, अगर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर कि I have run this code, so I can see, you can see the E. Suppose I would like to print the capital H, तो इसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी? So print small a and you have to write the 0 here. Okay, so you can see what is the output. The output is capital H. So the position of capital H is 0. Okay, suppose I would like to print चलो एक बार दिखाता हूँ आपको -1 से ना, -1 से क्या आता है. So print A और -1 मैंने यहाँ टाइप किया, -1. तो क्या है देखो यहाँ पर -1. तो -1 में क्या है, कौन सी है? D. ओके, so like this you can check. Suppose this is the next code is print A 2:5. 2 कॉलन का सिंबल देना है आपको, 5 लिखना है आप. ठीक है, so you can see what is the output. So output is LLO. So why this return the LLO? So H, can anyone tell me why it returned the LLO? So it defined the range. Okay, so H start with the 0, 0, 1, 2, 3, 4. So 0, 1, 2. So सेकेंड वाली कैरेक्टर कौन सी, जो सेकेंड इंडेक्सिंग के ऊपर कौन सी है? L. ठीक है, so 2, 3, 4. ओके, सो LLO 5, जो 5 इंडेक्सिंग है यहाँ पर, तो उसमें आपके पास जो प्रिंट होगी वो 4th तक प्रिंट होगी. ठीक है, लास्ट वाली जो भी आप नंबर यहाँ इंडेक्सिंग मेंशन करोगे, 5th जैसे मेंशन किया हुआ मैंने, तो 5th वाली कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगी, वहां पर 2 to 4 प्रिंट होगी. सो जितना भी आपने रेंज दिया हुआ है वो -1. ठीक है, सो सेकेंड कैरेक्टर इज L, थर्ड कैरेक्टर इज L एंड फोर्थ कैरेक्टर इज O. Okay, like this I am writing here print A and 2 to 6, and you run this code, then you can see what is the output. So 2 to 6, so I have removed the space between hello and world, so because space is also a character, so you can confuse. So 2 to 6. So what is the second position? Second position is H0, 1, 2. Okay, so 2, 3, 4, 5 LLOW. मैंने स्पेस रिमूव कर दिया वहां से. स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर. So next, you can check the length of the string using len function. Len function होती है, so you can check what is the length of a string. Okay, so you can check the length of a string. So length of a string is 10. Okay, length of a string is 10 here. So here hello world 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have written hello world, and if I insert the space, so इसकी लेंथ क्या है देख सकते हो आप. अगर मैंने स्पेस इंसर्ट किया तो then the length is 11. Hello. So okay, so here it is clear. Length space is also a character. अगर आप स्पेस यहाँ इंसर्ट करते हो तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 characters are there. Okay, so you can also check the length of the string.
Now print a dot lower. Okay, a dot lower. So this is the function. So you can convert all the characters into the lower form. Okay, lower and upper. So you can check all the characters and the lower case. So H E L L O W W O R L D all are in the lower case. आप तो कैसे इसको लोअर केस में कन्वर्ट कैसे करना है? सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, ए इज द वेरिएबल एंड ए डॉट लोअर, then you have to take the print and you pass all these function a dot lower, you have to pass from the print function, then you can take the print, otherwise you cannot take the print. Okay, like print a dot upper, you can try print a dot upper. ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर देखो ऑल दी कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो किसमें कन्वर्टेड हो गए, कैपिटल में ना. तो हेलो वर्ल्ड ऑल आर इन दी अपर केस. यू कैन ऑल्सो रिप्लेस you can so one function is print, you can try print a dot replace. Okay, a dot replace, so you can replace, like I would like to replace H with J. Okay, so here you can see पहले क्या आ रहा था हेलो वर्ल्ड, तो मैंने H को किससे रिप्लेस कर दिया, J से. ओके, सो A डॉट रिप्लेस with the help of this function you can replace any character. Okay, so next is you can split the string, A dot split. Okay, so A dot split is the function. तो आपको स्प्लिट कहां से करनी है, मैं स्प्लिट चाहता हूं यहां से एल से करना, तो यू कैन सी. ठीक है, देखो यहां पर एल एच ई डबल एल, तो एल से हमारे पास स्प्लिट हो गई, एल द लेफ्ट साइड, दिस इज द पार्ट लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड. ओके, so you can try this code if you want to, you can if you want to take the print at the runtime, take the input at the runtime. Okay, so you have to use the input function. Okay, you can see here I am using the input function. So print enter your name, मैंने रन कर दिया इस कोड को. यू कैन सी हियर enter your name, और यहाँ पर एक बॉक्स बन करके आ गई ना, दिस इज द बॉक्स. तो मैंने यहाँ पर लिखा अर्जुन. ओके, मैंने यहाँ पर एक इनपुट दिया अर्जुन. अगेन अब मैं सपोज मैं यहीं पर कोड लिखता हूं, यहाँ पर PRINT प्रिंट प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो. और इफ यू वांट टू ऐड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो क्या करना है, आपको प्लस का सिंबल यूज करना है, प्लस सिंबल. और मेरे पास वैल्यू, इनपुट वाली वैल्यू किस में स्टोर होगी, एक्स में, तो मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया. ठीक है, तो अगेन आई रन दिस कोड. थोड़ा there is some connectivity problem, स्लो है. चलो मैं इसको you can try anyone trying, और कोई टाइप कर रहा है इस कोड को. So print enter your name and you can use the input function. So what is the use of input function? The basically input function you can take at the runtime. Okay, you can take any input and you can take the like here I have written print hello. Okay, plus x. So you can see this is the output in the slide. You can see hello ada. तो मैंने एडा क्या दिया यहाँ पर, मैंने इनपुट दिया एट द रन टाइम एंड आई हैव टेकन द प्रिंट लाइक प्रिंट फंक्शन हेलो प्लस एक्स. तो ये जो नेम है कहां पर स्टोर है, दिस नेम स्टोर इन द एक्स वेरिएबल. ओके, so if you are typing this code with me, then you can understand better. Otherwise only अगर आप देख रहे हो सिर्फ इसको तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा ना. So you have to write the code. तो
तो प्लीज एवरीवन एग्जीक्यूट दिस कोड, और चैट पर ना, चैट पर आप उसको जो है मुझे उसकी आउटपुट उसको सेंड करो। चैट पर मैं चेक कर रहा हूँ आपके। तो एवरीवन प्लीज एग्जीक्यूट दिस कोड and show me output slide if you have your any confusion. So like the print, enter your name, x is equal to input. Okay, Jupyter notebook यूज करना आपको, and print hello plus x, and आपके पास आउटपुट क्या आया, प्लीज शो मी द आउटपुट।